we will study the chapter number 13, force, work, and energy. So in this topic, we will study what do you mean by force and what are the effects of force. So first is, do you remember? You have to write pull or push below each picture. तो इन जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें हमने पुल और पुश राइट करना है. अगर हम चीजों को खींच रहे हैं तो पुल लिखेंगे, अगर हम चीजों को धक्का लगा रहे हैं तो पुश लिखेंगे. सो दिस इज सेकंड पिक्चर. एक गर्ल है, इसको प्रेस कर रही है, इसको धक्का लगा रही है, इसको बॉल को धक्का लगा रही है, तो दिस इज पुश. और ये कार्ट जो है इसको पीछे जो रिक्शा है ये तो खींचना मीन्स पुल. So this is pull. So third picture is pulling the cart, and in the second picture she is pushing the wall, and this picture is exercise for you. So you have to write pull or push in the picture number 1, and so you have to write pull or push in the following picture. In the second case, it is push. In the third case, it is pull. And you have, this is homework for you. So pulling is खींचना, pushing धक्का लगाना. And what do you mean by force? Pull and push. Pull or push is called force. किसी भी चीज को खींचना और किसी भी चीज को धक्का लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. So what do you mean by force? Pull or push. Pull or push is called force. So next is, effort is required to put an object in motion or to stop a moving object. Suppose a car is moving. If you want to stop this car, what is required? Effort. What is required? Effort. And if you want to run the bicycle, so you have to run this bicycle as shown in the figure. If you want to run this bicycle, which is required? Effort. Which is required? Effort. किसी भी चीज को चलाने के लिए और किसी भी चीज को स्टॉप करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? Effort. And this effort is called force. So this effort is called force. And what is the definition of force? Pull or push. Pull or push. Pull or push is called force. And what are the examples of force? First is, we apply force. We are applying force to push the pedals of bicycle in order to make it move. Suppose this kid is riding a bicycle. So this kid is riding a bicycle and he wants to move the pedal. So which is required? Effort. So which is required? Effort. अगर इस bicycle को चलाना है तो हमें क्या चाहिए? Effort. And this effort is called force. So this effort is called force. And what are the example of force? To move or to ride a bicycle, we require force. So conclusion is, what do you mean by force? A pull or push. किसी भी चीज को खींचना और किसी भी चीज को धक्का लगाना,
इसको हम क्या बोलते हैं? पुश. So next is effects of force. So what are the effects of force? Force can move an object. Force can move an object. When you push a table, you apply force to it. Suppose there is a table. So there is a table. If you want to push a table, and we have to apply force. If the force is sufficient, the table moves. अगर हमने किसी भी टेबल को अगर हमने मूव कराना है तो हमें क्या चाहिए? उसको पुश करना पड़ेगा. अगर उसको हमने इतना पुश किया कि वो टेबल मूव कर जाएगी, so this force is sufficient. The force of wind moves the trees or branches of tree. जो trees हैं उसकी branches जो हैं वो क्यों मूव करती हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है. And it is the force of wind. And next is flowing water moves a boat because it has force. और जो हमारी बोट मूव कर पाती है और उसको कौन मूव कराता है? फ्लोइंग वाटर. जो पानी बह रहा होता है उसकी वजह से बोट मूव करती है. So it is due to flowing water. And next is a bullock pulls a cart because it applies force. And as we know, if we kick a football, so in the first example, what is the first example? So I'm showing what are the effects of force. So first effect is force can move an object. एक गर्ल है फुटबॉल को किक कर रही है, तो ये फुटबॉल क्या करेगी? आगे मूव करेगी. वो क्यों मूव कर रही है? क्योंकि ये फोर्स अप्लाई कर रही है. So force can move a stationary object. Force can move an object. So what are the effects of force? First is force can move an object. And next is force can stop a moving object. And what are the examples? If you put a hockey stick in front of moving ball, the ball will stop. Suppose ये हमारी हॉकी बॉल मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, इससे हमने हॉकी स्टिक आगे रख दी इसके, तो ये बॉल क्या हो जाएगी? स्टॉप. तो बॉल को स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स. So force can stop a moving object. Force can stop a moving object. And next is force can change direction. How can force change the direction? Suppose एक बॉल आ रही है और ये बैटमैन इसको किक करेगा. बैटमैन इसे बैट से बॉल को मारेगा और बॉल की डायरेक्शन पहले मान लो यहाँ जा रही थी और इसने इस तरफ किक किया तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगी. तो फोर्स से क्या हो गया? डायरेक्शन इज चेंजिंग. For direction is changing due to force. And next is change in shape. So how can you change in shape? Due to force. अगर हमारे हाथ में बॉल है, उसको हमने हाथ से प्रेस किया, दबाया, तो इसकी क्या होगी? शेप चेंज होगी. तो force can change shape. So what are the effects of force? What are the effects of force? So what are the effects of force? So what are the effects of force? First is force can move an object. Second is force stops a moving ball. Third is force can change the direction of movement due to force. And next is force can change
in shape. So these are all effects of force. So these are all effects of force. So what are the effects of force? First is force can move an object. Force किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है. एंड व्हाट आर द एग्जांपल? अगर हमने कोई फुटबॉल है, इसको किक करते हैं तो फुटबॉल क्या करने लग जाती है? मूव करने लग जाती है. क्यों मूव करने लग जाती है? ड्यू टू फोर्स. सो फर्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है. अगर एक फुटबॉल को किक करते हैं, किक करने के बाद फुटबॉल क्या करती है? मूव करने लग जाती है, चलने लग जाती है. क्यों चलने लग जाती है? क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर? फोर्स. So first effect is force can move an object. And what are the second effects? Force stops a moving ball. अगर एक कोई बॉल मूव कर रही है और हमने हॉकी स्टिक से आगे इसको आगे रख दी, तो ये बॉल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. तो कौन स्टॉप कर रहा है? फोर्स. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल. Force can stop a moving ball. And what are the third effects of force? Change in direction. Change in direction. And how direction is changing? Suppose एक बॉल यहाँ पे है और यहाँ से बैट के पास यहाँ पे आती है और बैट वो इस डायरेक्शन में मूव करा देता है इसको, बॉल को, और बॉल क्या आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है. तो बॉल की क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो रही है. किसकी वजह से? फोर्स की वजह से. So force is changing the direction of motion. And fourth effect is change in shape. अगर हमारे हाथ में बॉल है, उसको हम प्रेस करते हैं अपने हैंड से, तो इसकी बॉल की शेप चेंज हो रही है. इट इज ड्यू टू फोर्स. So it is due to force. So again I am repeating. So first effect of the force is, so what are the effects of force? So first effect is force can move an object. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है. एंड व्हाट आर द एग्जांपल? किकिंग ऑफ फुटबॉल. Kicking of football. So kicking of football. So these are the example of first effect. And second effect is force can stop a moving ball. Force can stop moving ball. So force can stop moving ball. And what are the example of force can stop a moving ball? By hitting the ball with hockey stick. By hitting the ball with hockey stick. So next, third effect is change in direction. So how direction is changing? Direction is changing due to force. अगर बैटमैन अगर इसको बॉल को प्रेस कर रहा है, किक कर रहा है, तो उसकी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इट इज ड्यू टू फोर्स. एंड नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट इज चेंज इन शेप. Shape is changing due to force. So what do you mean by force? Push or pull. Push or pull is called force. किसी भी चीज को खींचना और क्या किसी भी चीज को धक्का लगाना, this is called force. और फोर्स के इफेक्ट्स कौन से हैं? फोर्स किसी भी चीज को मूव करा सकती है. फोर्स किसी भी चीज को रोक सकती है. फोर्स किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकती है.
फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है. मूव, स्टॉप, change in direction, change in shape. So these are all effects of force. So next is types of force. So there are different type of force. First is frictional force. First force is frictional force. When an object slides over a rough surface, a force acts between them, and these force slow down the motion of objects, and this force is known as frictional force. So what is frictional force? जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर इसके मोशन को कम कर रहा है, मतलब इसको रोक रहा है चलने से, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन को रोकता है. So this is called frictional force. For example, a rolling wheel comes to halt after some time due to frictional force. Suppose there is a rolling wheel, suppose there is a wheel and this comes to rest after some time. अगर कोई भी wheel है चलता चलता रुक जाएगा, वो क्यों रुक जाएगा? This will stop due to frictional force. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुक रहा है वो किसकी वजह से रुक रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. सो नेक्स्ट इज this boy is sliding down. So this boy is sliding down. Why this boy is sliding down? So this is sliding down. Why this is sliding down? Due to force of friction. So due to force of friction, this boy is sliding down. So this boy is sliding down due to force of frictional. Or next is gravitational force. What do you mean by gravitational force? When we throw a ball, it first rises in the air and then fall back to the ground. अगर किसी बॉल को हमने ऊपर उठाते हैं, पहले वो एयर में जाती है, फिर वो दोबारा वापस आ जाती है ग्राउंड में. And why this happens? This is due to gravitational force. So what do you mean by gravitational force? This is due to our earth. So this is the gravitational force. Suppose these are apples. ये जो apples हैं, these are the apples. और ये apple क्यों fall कर रहे हैं? ये नीचे क्यों fall कर रहे हैं? क्योंकि जो earth है, यहाँ पे earth है, वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है. और किस force से खींच रही है? This is due to gravitational force. So this is due to gravitational force. ये न्यूटन ने लॉ दिया था. The Newton scientist discovered gravitational force. So these apples are falling down. These apples are falling down due to gravitational force. So why these apples are falling down? ये apples क्यों नीचे गिर रहे हैं? Due to force of gravitation. And what do you mean by force of gravitation? जो भी हमारे जो सारी चीजों को अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है. And this is due to force of gravitation. So next is muscular force. So what do you mean by muscular force? The force exerted by our muscles is called muscular force. Suppose in the gym, we use these type of dumbbells. These are dumbbells used in gym for making muscles.
So these muscles are squeezing or increasing due to muscular force. जो muscular force है, जो इस muscles में जो force लग रहा है, तो this is due to muscular force. अगर किसी heavy weight को अगर हम उठाते हैं, तो muscles में एक force लगता है. This is called muscular force. So this is called muscular force. So what are the types of force? Force of friction. Second is force of gravitation. Third is muscular force. So you have to let us give at least 2 examples from daily life where you use force. So you have to write 2 examples from your daily life where you use force. हम force हम कहाँ use करते हैं? अगर हमने अपनी बुक को उठाना है, लिफ्टिंग अवर बुक, अगर ये बुक को उठाना है तो हम क्या यूज करते हैं? फोर्स. और कहाँ हम फोर्स यूज करते हैं डेली लाइफ में? फॉर पुलिंग बेंच. पुलिंग बेंच को अगर हमें खींचना है तो हम भी फोर्स अप्लाई करते हैं. अगर किसी भी कार को चलाना है देन फोर्स इज रिक्वायर्ड. अगर किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज करनी है देन फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट इज टाइम टू आंसर? Dash is applied to push or pull something. किसी भी चीज को खींचना और किसी भी चीज को धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए? Force. Force is applied. So next is the force by which earth pulls towards itself. किस फोर्स से जो सारी अर्थ जो है सभी चीजों को नीचे खींच रही है? इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. So second answer is gravitational force. So this is gravitational force. The force which slows down or stop a moving body. किसी भी चीज को कौन सा फोर्स रोकता है? This is force of friction. This is force of friction. So this is force of friction. So the force exerted by our muscles is known as muscular force. So this is muscular force. So जो हमारी muscles जो force लगाती हैं, this is due to muscular force. So what are the types of force? So what are the types of force? I will show with the help of example. So this boy is sliding down. Why this boy is sliding down? Due to force of friction. Frictional force कौन सा होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है. इसको ये स्टॉप कब होगा? यहाँ पे स्टॉप होगा. क्यों स्टॉप हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट इज एप्पल इज फॉलिंग. ये एप्पल्स ट्री से नीचे ही क्यों गिर रहे हैं? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स. किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नेक्स्ट इज जब हम जिम में हम डंबल यूज करते हैं तो हमारे मसल्स में एक फोर्स लगता है. This is called muscular force. So this is called muscular force. So these are the types of forces. So these are the types of forces. So what are types of forces? First is frictional force. First is frictional force. And next is gravitational force. Second is gravitational force. So second is gravitational force. And third is muscular force. So these are the types of forces. So what are the types of forces? Frictional force, gravitational force,
muscular force. So these are the types of force. So now again I am repeating the lecture. So what do you mean by a force? So what do you mean by a force? Pull or push. Pull or push is called force. So when we are, suppose this kid is riding a bicycle, and which is required effort, which is required effort. So effort is force. इस bicycle को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? Force. And what do you mean by force? A pull or push is called force. So pull or push is called force. And what are the examples of force? We push the pedal of bicycle, we require force. So next is, what are the effects of force? So what are the effects of force? Force can move an object. Force किसी भी object को चला सकता है. Force किसी भी object, चलते हुए object को रोक सकता है. Force किसी भी object की direction change कर सकता है. Force किसी भी object की shape change कर सकता है. और force कैसे चलाता है object को? अगर एक फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल क्या करने लग जाती है? चलने लग जाती है ड्यू टू फोर्स. अब ये हमारी बॉल है, मूव कर रही थी, इसको हमने हॉकी स्टिक से रोक दिया, और क्या चीज चाहिए इसके लिए? फोर्स. अब एक ये बैट है और बॉल आ रही थी, यहाँ से बॉल आ रही थी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बैट, क्या चाहिए? फोर्स. और इस बॉल की जो शेप चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? फोर्स. So these are the effects of force. So these are the effects of force. Again, I am repeating. What are the effects of force? Force can move an object. Force can stop a moving ball. Force can change direction of movement. Force can change shape. And force can move an object. So these are the effects of force. So if you are kicking a football, which is required? Force. And next is, if you want to stop object, which is required? Force. If you want to change the direction, which is required? Force. Suppose हम चपाती बनाते हैं तो उसमें हम अपने प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं. तो फोर्स क्या चेंज करता है? शेप. फोर्स क्या चेंज करता है? शेप. And these are the effects of force. Next is, do you know? Muscles cannot push, but they can only pull. Muscles को हम push नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं? Muscles को अगर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? Pull कर सकते हैं. Cannot push, can pull but cannot push. So muscles we cannot push. Muscles को हम push नहीं कर सकते, only we can pull. Muscles cannot push, only we can pull. And what are the types of force? First is frictional force. The force which slow down object is called frictional force, and the force due to earth is called gravitational force, and due to muscles this is called muscular force. And dash is applied on push to pull something, force. And next is the force by which earth pull object towards it. It is due to gravitational force.
The force we slow down, this is due to frictional force. This is due to frictional force. And force due to muscle, this is known as muscular force. So if you have any query regarding this topic, you can ask.